Okay, student, today we are going to study about general organic chemistry. In general organic chemistry, the important topic is electronic displacements. Electronic displacement. Electronic displacements in organic compounds. Okay. So there are majorly five types of electronic displacements. Number one is inductive effect. Number two is resonance. Number three is mesomeric effect. Number four is hyperconjugation. And number five is electromeric effect. Out of these five effects, the first four effects are the first four effects are permanent effects. The last one is temporary effect. Okay. So permanent means these four effects will exist at all the point of time, and electromeric effect will come in picture in particular situation, particular condition. Okay. So we are going to study these effects one by one. So we'll start with inductive effect. What is inductive effect? When a covalent bond is formed, when a covalent bond is formed between the two atoms of different electronegativity. When a covalent bond is formed between the two atoms of different electronegativity, the sigma bond electron pair between them is slightly shifted towards the more electronegative atom, because of which a dipole gets generated between the two atoms. So partial charges gets developed on the two atoms. Partial charges will get developed on the two atoms. So partial charges get developed on the two atoms. Okay. And the impact of this polarization causes polarization of the adjacent carbon chain.
So adjacent carbon chain also gets polarized. This effect is known as inductive effect. This effect is known. So when a covalent bond is formed between the two atoms of different electronegativity, for example, if there is covalent bond formation between the two atoms of different electronegativity, for example, CH3CH2F. Here, this bond is formed between the two atoms carbon and fluorine, which are having different electronegativity. Because of this, the sigma bond electron pair is not equally shared between the two atoms. It is slightly shifted towards fluorine. Okay, it is slightly shifted towards fluorine, because of which delta minus will get developed on fluorine and delta plus will get developed on carbon because of the generation of a dipole. And the impact of this dipole on the adjacent carbon chain causes the polarization of the carbon chain also. Delta plus plus will get generated on this carbon. This uh, polarization of adjacent carbon chain is known as inductive effect. So this is the inductive effect. And what is the reason of inductive effect? Basically, that is the electronegativity difference. Okay. So this is about inductive effect. Next, types of inductive effect. Types of inductive effect. There are two types of inductive effect. First one is plus I effect, and the second one is minus I effect. Plus I effect and minus I effect. So what is plus I effect? Plus I effect. An atom or a group, which has tendency to withdraw electron cloud. An atom or a group which has tendency to withdraw an atom or a group which has tendency to withdraw electron cloud is known as is known as a sorry an atom or a group which has tendency release to release release electron cloud is known as a plus I group. And the phenomenon is known as plus I effect. Okay. Second type, minus I effect. What is minus I effect? An atom or a group which has tendency to withdraw electron cloud are known as or is known as minus I group. And the phenomenon is known as minus I effect. And the phenomenon is known as minus I effect. Okay. This is about minus I effect and plus I effect. Plus I effect and minus I. There are two types of inductive effect. Next, properties of properties of inductive effect. Properties of inductive effect. First property is it is permanent effect. It is permanent effect. That means it will exist. That means it will exist
at all point of time. It is permanent effect, it will exist at all point of time. Okay, हमेशा exist करेगा. दूसरा, it travels through only sigma bond. It travels through only sigma bonds and not through pi bonds. And not through. So inductive effect travels through only sigma bond. It does not travel through pi bond. तो हमेशा इंडक्टिव इफेक्ट सिग्मा बॉन्ड के थ्रू ट्रैवल करता है, पाई बॉन्ड के थ्रू ट्रैवल नहीं करता. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने किसी ने आपको पूछा व्हाट इज करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डायरेक्शन ऑफ inductive effect, this is the example. So I am taking another example here. I am taking NO2 group, which is also minus I group. Okay, so these two are representations, suppose, and they're asking which one is correct. Here this will withdraw electron, so delta minus, delta plus, withdraw electron, delta plus plus. So like this as shown, delta plus plus plus, delta minus, delta plus, delta plus plus, delta plus plus plus. So you can see here among these two, one is sigma, one is pi. So it is shown that it is traveling through both the bonds. So it is wrong representation. In this, if it is sigma, this is pi. So it is shown that it is traveling only sigma. So this representation is correct. So this is how question can be asked. Which of the following representation of the direction of inductivity is correct? So always remember sigma bond. This inductive effect travels through only sigma bond. Okay. Okay. So next property we will study, that is inductive effect. Inductive effect is distance dependent effect. Inductive effect is distance dependent effect. Okay. So as distance from the group increases, impact of inductive effect goes on decreases. Inductive effect is a inductive effect is a distance dependent effect. Inductive effect is a distance dependent effect. Inductive effect is a distance dependent effect. As distance from the group increases, the impact of inductive effect goes on decreases. So for example, ऐसा है, जो example है, chlorine is a minus I group, so my delta minus, delta plus, delta plus plus, delta plus plus plus, delta plus 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 plus. So inductive effect is a distance dependent effect. As distance from the group increases, the impact of inductive effect goes on decreases. So Cl is a group from which the source of minus I effect. So this is the first carbon, this is the second carbon, this is the third carbon, fourth carbon. As inductive effect uh, as we can see the inductive effect on different carbon atoms. The position of the carbon atoms uh, is far away from chlorine. As you can see, this carbon is near to chlorine, nearest to carbon to chlorine. This is then next to that carbon. This is next. This is next. This is the carbon which is very far from the chlorine. So as distance from chlorine increases, the inductive effect goes on decreases. You can see. So therefore, delta plus is greater than delta plus plus is greater than delta plus 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 is greater than delta plus 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 plus. So this is the in this way we can see the partial charge goes on decreases on the on the carbons. So impact of inductive effect goes on decreases. In fact, you need to remember one thing, that after third carbon atom,
The impact of inductive effect is almost negligible. So after third carbon atom is almost negligible. So you can see here, this is the carbon. Here the inductive effect is almost zero, minus I effect. So you can, if I can give you say another example like this. So suppose this is the example. This is a group, delta minus, delta plus, delta plus plus, delta plus plus plus. So inductive effect will travel up to this one, two, three, only three carbon. On this carbon atom, inductive effect is negligible. This is the fourth carbon. So after third carbon atom, it is considered that inductive effect is almost negligible. Inductive effect is almost negligible. Inductive effect is almost negligible. Okay. So this is about the third property, that is, it is distance dependent. Fourth property, the CH sigma bond is considered as CH sigma bond is considered as reference for inductive effect. The CH sigma bond is considered as reference for inductive effect. तो देखो, इंडक्टिव इफेक्ट जो है ना, वो एब्सोल्यूट कंसेप्ट नहीं है. इंडक्टिव इफेक्ट इज ए रिलेटिव कंसेप्ट. तो किसी को यहाँ पे रेफरेंस मान के पकड़ के जा रहे हैं हम लोग. जैसे आपको मालूम रहेगा, पोटेंशियल एनर्जी का कंसेप्ट में हम लोग इन्फिनिटी पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो पकड़ते हैं. अंदर की तरफ इन बाउंड्री सिस्टम के लिए पोटेंशियल एनर्जी हमेशा नेगेटिव रहती है, बाहर की तरफ पॉजिटिव रहती है. तो इसी तरह यहाँ पे भी क्या किया गया है, सीएच बॉन्ड जो है उसको रेफरेंस माना हुआ है. द सीएच बॉन्ड इज कंसिडर्ड एज रेफरेंस फॉर इंडक्टिव. इसका मतलब क्या है? दैट मीन्स दैट मीन्स CH bond is considered to be a non-polar bond. तो CH bond को नॉन पोलर बॉन्ड माना, इज कंसिडर्ड टू बी नॉन पोलर बॉन्ड. और CH bond नॉन पोलर का बॉन्ड कब होगा? दैट मीन्स दैट मीन्स द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी vities of carbon and hydrogen are considered to be same. दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को सेम इक्वल माना गया है, तभी ये हो सकता है. सीएच बॉन्ड को हम लोग कब रेफरेंस पकड़ रहे इंडक्टिव इफेक्ट के लिए? कि अगर उसको रेफरेंस पकड़ रहे हैं, मतलब उसकी पोलैरिटी को हम लोग जीरो पकड़ रहे हैं, मतलब उस बॉन्ड को हम लोग नॉन पोलर बॉन्ड कंसिडर कर रहे हैं. और नॉन पोलर बॉन्ड सीएच बॉन्ड कब होगा? जब कार्बन हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑलमोस्ट सेम होगी तब. ठीक है, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं. अभी हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं कि इंडक्टिव इफेक्ट के कितने टाइप है. इंडक्टिव इफेक्ट के चार टाइप, दो टाइप हम देख चुके हैं, प्लस आई इफेक्ट एंड माइनस आई इफेक्ट. दो टाइप है इंडक्टिव इफेक्ट के. उसमें अभी देखते हैं कौन से ग्रुप्स है. तो सबसे देखते पहले पहले देखते हैं प्लस आई ग्रुप्स कौन से ग्रुप्स प्लस आई इफेक्ट शो करते हैं. प्लस आई ग्रुप्स मतलब कौन सा? द ग्रुप शोइंग प्लस आई इफेक्ट. तो इसमें बहुत सारे ग्रुप्स होते हैं. NH-, उसके बाद O-, उसके बाद CO-, उसके बाद CCH3 थ्राइस. जितने भी अल्काइल ग्रुप होते हैं ना, वो प्लस आई शो करते हैं. उसके बाद कौन आने वाला है? CH, CH3 ट्वाइस. उसके बाद CH2, CH3. उसके बाद जितना लंबा कार्बन चेन होगा ना, उतना ज्यादा प्लस आई. उसके बाद आएगा ट्रिटियम. ट्रिटियम जो हाइड्रोजन का आइसोटोप है, इसका प्लस इफेक्ट ज्यादा रहता है देन डिटोरियम. डिटोरियम का उससे कम है, और उससे कम हाइड्रोजन का है. तो ट्रिटियम इज ग्रेटर देन, डिटोरियम इज ग्रेटर देन. दिस इज द ऑर्डर ऑफ plus I effect among the isotopes of hydrogen. So this is the order of plus I groups. Always remember, this is the order of plus I groups. ये किसका है? प्लस आई इफेक्ट का ऑर्डर है. ठीक है,
प्लस प्लस है अब इसमें आप अपना ग्रुप्स भी ऐड कर सकते हो, जैसे कि मैंने अगर बात करूंगी, अगर मैं CH3 माइनस की बात करूँ, CH2 माइनस ग्रुप, CH2 माइनस ग्रुप, तो ये तो NH माइनस से भी ज्यादा आएगा, पहले आएगा, क्योंकि प्लस आई ग्रुप का टेंडेंसी क्या, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का टेंडेंसी है, कार्बन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो कार्बन कम इलेक्ट्रॉन होने के कारण नाइट्रोजन ज्यादा है, तो कार्बन की टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की ज्यादा होगी। तो अगर मैं CH2 माइनस लगा तो CH2 माइनस का तो प्लस आई इफेक्ट तो NH माइनस से भी ज्यादा आएगा, उसके बाद में O माइनस। तो यहाँ पे ऐसे मतलब ये एक ऑर्डर है, पर उसमें आप अपने ग्रुप भी ऐड कर सकते हो, ऐसा नहीं कि पूरी दुनिया के सारे ग्रुप इतने, इसमें जितने ग्रुप अभी मैंने देखे रखे उतने ग्रुप से, इसमें अलग अलग ग्रुप आते रहते हैं, उसको आपको समझना है कि कौन सा ग्रुप कहाँ पे किसमें ऑर्डर में कहाँ पे बैठने वाला है, वो सबसे ज्यादा रहेगा उसका, वो किसके बाद रहने वाला किससे पहले रहने, तो आपको थोड़ा सा कोरिलेट करके थोड़ा सा लॉजिक लगा के समझ सकते हो, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट टाइप में देखते हैं कौन से माइनस आई ग्रुप्स होते हैं। माइनस आई ग्रुप्स मतलब कौन से, द ग्रुप्स एग्जिबिटिंग द ग्रुप्स एग्जिबिटिंग माइनस आई इफेक्ट, द ग्रुप्स एग्जिबिटिंग माइनस आई इफेक्ट, कौन से ग्रुप्स माइनस आई इफेक्ट शो करते हो देखते हैं, ठीक है। तो ऑब्वियस है, देखो माइनस आई ग्रुप मतलब क्या, माइनस आई ग्रुप कौन कौन से ग्रुप माइनस इफेक्ट शो करेंगे, जिनकी इलेक्ट्रोनेट ज्यादा होगी, क्योंकि माइनस आई इफेक्ट क्या होता है, माइनस आई ग्रुप्स क्या होते हैं, द एन एटम और ए ग्रुप, लिखा है ना हमने डेफिनेशन ऊपर, एन एटम और ए ग्रुप, an atom or a group which has tendency to withdraw electron cloud is known as minus I group and the phenomenon is known as minus I effect। तो ऐसे ग्रुप्स जिनकी टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करने की, कौन से ग्रुप इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेंगे, किसकी टेंडेंसी होगी, जिनकी इलेक्ट्रोनेट ज्यादा होगी। तो ऐसे ग्रुप्स जिसमें मोर इलेक्ट्रोनेट एटम्स है, वो क्या शो करेंगे, माइनस इफेक्ट शो करेंगे। तो कौन से हो सकते हैं यहाँ पे, इसका ऑर्डर एक याद रख लो, बाद में इसको मैं समझाता हूँ मैं आपको कैसे ऑर्डर है। सबसे पहले NR3 प्लस, SR2 प्लस, NH3 प्लस, SO3R, के बाद में आने वाला है, सॉरी, इसके पहले है NO2, इसके बाद में ये, इसके बाद में NO2 है, NO2, उसके बाद में है SO3R, उसके बाद में CN, उसके बाद में है CHO, एल्डिहाइड ग्रुप, उसके बाद में है COR, उसके बाद में कार्बोक्सिलिक एसिड COH, उसके बाद में है, उसके बाद में है OR, उसके बाद में है OH, उसके बाद में है C ट्रिपल बॉन्ड CH, सॉरी OR OH के बाद में, एक मिनट, ये जो हाइड्रोजन कार्बोक्सिलिक एसिड है उसके बाद में हाइड्रोजन सत्य फ्लोरीन, उसके बाद में आएगा क्लोरीन, उसके बाद में आएगा ब्रोमीन, उसके बाद में आएगा आयोडीन, उसके बाद में आपका आएगा OR, उसके बाद में आएगा OH, उसके बाद में आने वाला है OR OH के बाद, उसके बाद C ट्रिपल बॉन्ड CH, उसके बाद में आने वाला है NH2, उसके बाद में आने वाला है PH, उसके बाद में आने वाला है CH डबल बॉन्ड CH2, उसके बाद में आने वाला है H। ये आपका ऑर्डर है माइनस इफेक्ट। तो NR3 प्लस, SR2 प्लस, NH3 प्लस, NO2, SO3R, CN, CHO, COR, COH, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, OR OH, C ट्रिपल बॉन्ड CH, NH2, PH, CH डबल बॉन्ड CH2H, ये ऑर्डर है। अभी देखो, आप तो बोलोगे सर सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव तो फ्लोरीन है, तो फ्लोरीन सबसे ज्यादा पहले आना चाहिए था, ठीक है, वो फ्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है अमंग न्यूट्रल एटम्स। एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट को हमेशा याद रखना, पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज ऑन more electronegative, positive charge on more electronegative atom increases increases its
electronegativity, increases its electronegativity. Positive charge on more electronegative atom increases its electronegativity. फॉर एग्जाम्पल हमने देखा है यहाँ पे Nr3+, कौन सा ग्रुप है पहला, Nr3+। Nr3+ में नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेट आइटम, और उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया तो उसकी वजह से उसकी इलेक्ट्रोनेटिव बढ़ गई, और उसके वजह से फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेटिव है। उसके बाद में देखोगे आप, Nr3 के बाद कौन आ रहा है, Sr2 आ रहा है, तो इसलिए Nr2+ आपको आगे देखने मिल रहा है। वैसे Nr2+ जैसे आगे, वैसे NH3+ भी आगे देखने मिलेगा। ठीक है। NO2 में भी आपको पता है, NO2 का स्ट्रक्चर इस तरह से होता है, NO2 में भी नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, NO2 में भी नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो NO2 का स्ट्रक्चर इस तरह से है। ठीक है। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, एन वाले पहले आ रहा है। अगर इसमें OR2 लगा देता ना मैं, OR2+, तो OR2+ इसमें अभी ग्रुप इसमें ऑर्डर में है नहीं, पर अगर OR2+ की बात करें तो OR2+ का माइनस इफेक्ट NR3+ से भी ज्यादा होगा, क्योंकि ना ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कम्पेयर टू नाइट्रोजन, और दोनों के भी पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, तो ऑक्सीजन का भी इलेक्ट्रोनेगेटिव बढ़ रहा है, नाइट्रोजन का भी बढ़ रहा है। ठीक है। तो अभी दोनों का भी अगर इलेक्ट्रॉन बढ़े, दोनों तो पहले से ही ऑक्सीजन ज्यादा है नाइट्रोजन से, न्यूट्रल की बात करें, और पॉजिटिव चार्ज दोनों पे भी है, तो यहाँ पे क्या होने वाला है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन O+ इज मोर इलेक्ट्रोनेट देन N+ होने वाला है। तो इस तरह से इन दोनों, अगर मैं, ये हो गया, अगर मैं F पे ऊपर पॉजिटिव चार्ज लगा देता हूँ, F पे अगर पॉजिटिव चार्ज आता है तो ये तो ज्यादा है, उससे ज्यादा हो जाएगा, फिर ऑक्सीजन से भी ज्यादा होगा OR2+ से। इस तरह से Fr+ है तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन देन OR2+, ज्यादा इलेक्ट्रॉन देन Nr3+, तो इस तरह से है। ठीक है। तो इसकी वजह से Nr3+ ज्यादा आगे आ रहा है ऑर्डर में, तो आपको समझ में आ ही रहेगा ये पॉइंट। और आप बोलोगे सर Sr2+ भी क्यों आ रहा है फिर आगे, Sr2+ का एग्जाम, इसका क्या मतलब, क्यों ऐसा हो रहा है, Sr2+ क्यों सेकंड नंबर पे आ रहा है, इसका क्या रीजन है। आप पूछोगे सर Sr2+ क्यों आ रहा है सेकंड, इसका रीजन ये है कि जो फॉस्फोरस है, सल्फर है, क्लोरीन है, ये जो एटम्स है, इन सब एटम्स में आपको क्या देखने मिलते हैं, वैकेंट वैकेंट डी ऑर्बिटल्स देखने मिलते हैं, वैकेंट डी ऑर्बिटल्स देखने मिलते हैं। सो वैकेंट डी ऑर्बिटल्स होने के कारण में क्या होता है, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन वैकेंट, दे हैव टेंडेंसी टू एक्सपांड द ऑक्टेट, तो इनकी टेंडेंसी होती है ऑक्टेट को एक्सपांड करने की, मीन्स देयरफॉर दे आर दे आर अट्रैक्ट दे आर मीन्स दे आर हैविंग टेंडेंसी टू एक्वायर इलेक्ट्रॉन्स, एक्वायर इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन लेने की इनकी टेंडेंसी रहती है, बट तो इनकी टेंडेंसी क्या है, इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी है। तो क्योंकि इनमें वैकेंट डी ऑर्बिटल्स है, इनकी इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी है, बट दे हैव पॉजिटिव चार्ज हियर। अभी उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, उनकी टेंडेंसी है कि इलेक्ट्रॉन को ले, क्योंकि उनमें उनके पास वैकेंट ऑर्बिटल है, वो इलेक्ट्रॉन को फिल करना चाहते हैं, बट दे हैव पॉजिटिव चार्ज हियर, उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो गया, तो पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से क्या हो गया, देयरफॉर दे हैव बिकम दे हैव बिकम दे हैव बिकम इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट को आपको पता है, कोई भी स्पीसीज के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है मतलब वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गए, तो वो इलेक्ट्रॉन को चाहते हैं, इलेक्ट्रॉन लेना चाहते हैं, और और ये हो रहा है कि इलेक्ट्रॉन उनके मतलब उनके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल है, बट वो खुद इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गए, और उनकी चाहत बढ़ जाएगी ना इलेक्ट्रॉन के लिए, क्योंकि पहले से इलेक्ट्रॉन को चाहते थे, अब इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट हो गए, इलेक्ट्रॉन की कमी उनके पास हो गई, तो और तो मतलब तेजी से चाहेंगे इलेक्ट्रॉन को, तो उसके वजह से उनकी इलेक्ट्रॉनिटी और बढ़ जाएगी, देयरफॉर their electronegativity their electronegativity will get increased, so their electronegativity get increased. Understood. So how the atoms like sulfur, phosphorus
एंड क्लोरीन, इफ दे गेट पॉजिटिव चार्ज, अगर फास्फोरस पे पॉजिटिव चार्ज आए, सल्फर पे पॉजिटिव चार्ज आए, क्लोरीन पे पॉजिटिव चार्ज आए, तो उसमें क्या होने वाला है कि उनके पास वैकेंट ऑर्बिटल है, इलेक्ट्रॉन को चाहते हैं, बट खुद की ओर उनकी ओर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट हो रहे हैं, तो उनकी इलेक्ट्रॉन के लिए चाहत और बढ़ जाएगी, सो इलेक्ट्रोनेगेटिव उनकी बढ़ने वाली है। और एक इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट इसमें एक्सेप्शन आप देखोगे, सी ट्रिपल बॉन्ड सी एच इज हैविंग मोर माइनस इफेक्ट देन NH2। हाँ, 2 मिनट, इज मोर हैविंग मोर माइनस इफेक्ट देन NH2। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। वो क्या कंसेप्ट है कि द कंसेप्ट इज as percentage S character increases, the electronegativity increases। तो जैसे परसेंटेज एस कैरेक्टर बढ़ता है, इलेक्ट्रॉनिटी बढ़ती है। अगर हम लोग सी ट्रिपल बॉन्ड सी एच में देखेंगे, तो ये कौन सा कार्बन, कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है? sp हाइब्रिडाइजेशन है। एक सिग्मा बॉन्ड, दो सिग्मा बॉन्ड, दो सिग्मा बॉन्ड। ये भी कार्बन देखेंगे कौन सा sp हाइब्रिडाइजेशन है। sp में कितना परसेंट एस कैरेक्टर रहता है? 50% एस कैरेक्टर। 50% एस कैरेक्टर। sp2 में कितना परसेंट एस कैरेक्टर रहता है? 33% एस कैरेक्टर। sp3 में कितना परसेंट एस कैरेक्टर रहता है? 25%। सो जैसे sp3 से sp की तरफ जाओगे, तो परसेंटेज कैरेक्टर से बढ़ेगा, तो क्या बढ़ेगा? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यहाँ पे बढ़ने वाली है। देयरफॉर यहाँ पे देखोगे सी ट्रिपल बॉन्ड सी एच में जो कार्बन है, कौन सा? sp हाइब्रिडाइज कार्बन है। sp हाइब्रिडाइज कार्बन है। sp हाइब्रिडाइज कार्बन। एंड जो आपका NH2 है, NH2 में लोन पेयर स्टेशनरी है, तो इसमें इसका हाइब्रिडाइजेशन कौन सा? sp3 हाइब्रिडाइज नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन है। और दोनों में इलेक्ट्रोनिटी कंपेयर करोगे, सो sp हाइब्रिडाइज कार्बन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, कार्बन इज मोर इलेक्ट्रॉन देन sp3 हाइब्रिडाइज नाइट्रोजन। सो इसकी वजह से क्या हो रहा है? सी ट्रिपल बॉन्ड सी एच जो है, उसका माइनस का इफेक्ट NH से ज्यादा है। माइनस का इफेक्ट। ठीक है। सो ऑलवेज रिमेंबर दिस कंसेप्ट। Okay, I hope you understood the inductive effect in this lecture. I have tried to cover all the important points about inductive effect. So first, we have started about what kind of electronic displacement are possible in organic compounds. The 5 types of electron displacement are there, and among that, inductive effect we have discussed in detail. The types of inductive effect. Also, we have discussed the properties of inductive effect. Four important properties of inductive effect. Then we have discussed the decreasing order plus I groups, and as well as we have discussed the decreasing order of minus I groups. Also, we have discussed how the logic behind this order. So I hope you all have understood this. Uh, and thank you for your time. Thanks for watching. Okay, sir. So can we stop?